Dear student, how are you? I hope everything is all right. Today we are going to discuss our MCQ of chapter 1 which we completed. So, one by one, which one is not included in branch of chemistry? कौन सा केमिस्ट्री का ब्रांच नहीं है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बट नेचुरल केमिस्ट्री इज नॉट ए ब्रांच ऑफ आवर केमिस्ट्री. सो हियर आंसर इज डी रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? इन द कैंसर drugs we are using Taxol. So answer is B. In question 3, which one used instead of chlorofluorocarbon in refrigerator? CFC is chlorofluorocarbon, which is harmful to our atmosphere. So instead of it, the chlorofluorocarbon एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन फैलाएगा. सो 1122 tetrafluoroethane we are using instead of and that is called actually HFC. Hydrofluorocarbon we are using instead of CFC. So answer is A. In the question number 4, which one is not element? Which one is not element here? Diamond. Diamond is element. Why? Here every particle is made of carbon. So diamond is element. Graphite also element which is made of carbon atom. Graphite and diamond both are element. Oxygen which is also element. There are all the atoms are same. So ये वाला भी एलिमेंट रहेगा. सिलिका. सिलिका मीन्स सैंड. SiO2. Here two type of elements are there. So which is compound. So silica is not a element. State unit of velocity. Actually velocity means डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा. सो डिस्टेंस इन SI यूनिट वी आर मेजरिंग इन मीटर. टाइम इन सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड. व्हेन वी टेक मीटर पर सेकेंड, so here no any rest and it means there should be one, and when we take upward, so sign will be changed. So meter into second inverse is our answer D. In the question number 66, 293 Kelvin. 293 Kelvin equal to how much degree Faraday? So first of all we have to convert Kelvin into Celsius first. So Kelvin minus 273 gives degree Celsius. Here Kelvin 293 minus 273, so it gives 20 degree Celsius. Now we can convert Celsius into Fahrenheit by using this formula.
9/5 degree Celsius plus 32. Here in Celsius 20. So 36 plus 32, 68 degree Fahrenheit is our answer. Now in question number 7, all the same condition in temperature, pressure and volume, the ratio of mass of oxygen, ozone and SO2 is whenever temperature same, pressure same, volume same, so mass ratio we can represent by mass upon molecular mass. Here W2 upon M2 and W3 upon M3. So here is oxygen. Second one is the ozone and third one sulfur dioxide. O2 का molecular mass क्या रहेगा? In the O2 there are 2 oxygen. So atomic mass of oxygen 16. So 32. What about ozone? 3 oxygen. 3 into 16. So 48. What about SO2? 1 sulfur and 2 oxygen. Atomic mass always given in exam. Yes, 16. 32 plus 32 means 64 रहेगा. So 32, 48 and 64. So here molecular mass we can take 32, then 48 and here is 64. So W1, W2 and W3. Suppose here maximum mass 64, तीनों का mass suppose 64 we are assuming. So 32 is 64, here 1.3 and 1. So 2 is to 1.3 is to 1 is our answer. Like this. You can see 2 is to 1.3 is to 1 is our answer. State the molecule of 1 liter slight less water. In this question number 8, you can see state the molecules of 1 liter. 1 liter वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा? एक्चुअली 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होगा एंड 1000 मिलीलीटर मीन्स 1000 ग्राम रहेगा. 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. सो 1000 ग्राम रहेगा. यस, दैट इज 1000 ग्राम. सो वाई वाटर का डेंसिटी 1 रहता है. सो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. हियर डेंसिटी इज 1. सो हियर mass we have to define. Then volume is 1000. So 1000 into 1. So 1000 ग्राम होगा. वाटर का डेंसिटी 1. सो वाटर का ग्राम और मिली सेम रहेगा. हियर नाउ फॉर गेटिंग मोल there is formula for getting mole. Mole equal to mass upon molecular mass रहेगा.
here mass is 1000 gram and वाटर का molecular weight 18 रहेगा. In the water you can see there are 2 hydrogen and 1 oxygen. Okay, atomic mass of hydrogen 1, atomic mass of oxygen 16. So ये वाला 18 ग्राम पर मोल आएगा. So 1000 divided by 18 gives 55.55 mole. Now mole is defined. What is Avogadro number? 6.022 10 raised to 23 is Avogadro number. So 1 mole equal to molecules like Na. So in 55.55 mole molecules will be. So 55.55 into Na is our answer. So here answer is D. Like this we can define. So now question number 9. The mass of one atom of C12. One atom of C12. वन एटम का मास कितना रहेगा? यस, एक्चुअली 12 इज एटॉमिक मास. उसका मीनिंग ये रहेगा 12 ग्राम इक्वल टू 6.022 10 raised to 23 carbon atoms. It means 6.022 10 raised to 23 carbon atoms means 1 mole. कार्बन एटम का मास 12 ग्राम रहेगा. So 1 mass of 1 carbon atom will be, so 1 into 12 upon 6.022 into 10 raised to 23. ये कट हो जाएगा तो 1.992648. 10 raised to 23 in upward it will be minus. This one is our answer. 1 एटम का मास C रहेगा. Now next question number 10. Mass proportion of hydrogen oxygen in water is, in the water there are 2 hydrogen and 1 oxygen. So atomic mass of oxygen is 16. Of the hydrogen is 1.008. Accurate राउंड अबाउट 1 होगा बट एक्यूरेट 1.008 रहेगा. सो हाइड्रोजन का मास 2.016 रहेगा, ऑक्सीजन का 16. सो दोनों डिविजिबल बाय 2. सो 1.008 इज टू 8 रहेगा. ऐसे आंसर सी रहेगा. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, H2C2O4 into 2H2O is given. H2C2O4 into 2H2 is given. So molecular mass will be, here first of all number of hydrogen 2, number of carbon 2,
oxygen 4, again hydrogen 4 and oxygen 2. So total hydrogen 2 and 4 6, total carbon 2, oxygen 4 plus 2 6. Mass of one hydrogen is हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. सो 6 plus 24 plus 96. So it gives 126 U. 126 gram per mole is our answer. So you can see 126 our answer. Now percentage of hydrogen in water. वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना रहेगा? So we can define in the question number 12. First of all, molecular mass of water we have to define. Here 2 hydrogen, 1 oxygen. Atomic mass of hydrogen is 1 and of the oxygen 16. So 2 plus 16 means 18 gram per mole रहेगा. Total mass of water is 18 gram. So we have to assume 18 gram equal to 100% हो जाएगा. 18 gram means total. But here hydrogen is 2 gram. So 2 gram how much? 18 gram होगा तो total 100% हो जाएगा. So out of 18, 2 gram is hydrogen. 2 1 जा 2. So 2 gram how much? So 2 into 100 divide by 18. So 11.11% रहेगा. Yes. तो क्या करना होता है? I am giving a trick for it. Mass of hydrogen multiply by 100 and divide by molecular mass of water. So percentage of hydrogen देगा. ये mass of hydrogen ले लिया. यहाँ पे mass of hydrogen 2 gram into 100 divide by molecular mass of water. So it gives answer. So 2 into 100 upon 18, 11.11% रहेगा. In the question number 13, how much water required to convert one normal at initial stage, one normal 100 milli glucose solution is given. We have to convert into 0.1 normal glucose solution. So how much volume required? Yes, here is trick. In this case, you can see how much water? 1 normal glucose का 100 मिली solution दिया हुआ है. नॉर्मलिटी 100 मिली. इसका नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल करने के लिए हाउ मच वाटर वी हैव टू एड. ऑब्वियसली 1 नॉर्मल में से 0.1 होगा, नॉर्मलिटी डिक्रीज हो जाएगा. सो वाटर वी हैव टू एड. सो हियर इज द ट्रिक. N1V1 equal to N2. N1 initial, this one final. Initial and final. Initial normality N1. In initial volume V1. Here initial normality is 1 and initial volume is 100. Here final is 0.1. So final volume 1 into 100. ये वाला 0.1 मीन्स 1/10 अपॉन सपॉन अप जाएगा.
So 1000 milli is a final volume. ये वाला फाइनल वॉल्यूम रहेगा. इनिशियल वॉल्यूम 100 मिली था, फाइनल 1000 हो जाएगा. सो हाउ मच इज एडेड? सो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल गिव्स एडेड वाटर. सो 1000 माइनस 100 मिली पहले से था. 1000 मिली होने के बाद 0.1 नॉर्मल बन रहा है. सो हाउ मच इज एडेड? 900 milli water is added. So answer is D. N1V1 ये वाला इनिशियल नॉर्मलिटी, इनिशियल वॉल्यूम. 10.1 करने के लिए हाउ मच वॉल्यूम रहेगा? ये वाला फाइनल वॉल्यूम 1000 आ जाएगा. बट 100 मिली तो पहले से ही था. 1000 होएगा तो जब 1000 मिली होगा तब 0.1 नॉर्मल होगा. तो 100 तो पहले से ही था ना. तो 1000 माइनस 100, 900 मिली वाटर is added there. Now in question number 14, the empirical formula of compound is CH. Empirical formula CH and molecular mass is 78 gram per mole. Its molecular formula will be, now empirical formula is CH. So empirical mass 1 carbon 1 hydrogen, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, सो 13 ग्राम रहेगा. हियर n इज मल्टीपल वैल्यू. मॉलिक्यूलर मास अपॉन फॉर्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास इज 78, फॉर्मूला मास 13. So value of n is here 6. So molecular formula equal to multiple value into empirical formula. 6 into CH. So C6H6 is our answer. Now question number 15. The molarity of 2 mole HCl in 5 liter aqueous solution is molarity of 2 mole HCl in 5 liter. Actually molarity equal to mole per liter. Whenever mole and liter is given, so we can directly define using this formula. Here mole of HCl is given 2 mole, you can see, and liter is 5. So 2 by 5 means 0.4 molarity रहेगा. This is our answer. Now in question number 16. Zero 0.01 mole sucrose dissolve in how much liter water? So become 0.01 molarity solution. Yes, here very easy. Molarity equal to mole per liter. Molarity is given, you can see 0.01. Mole is given 0.01. So liter
मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रहेगा. सो लीटर इक्वल टू ऑब्वियसली 1. 0.01 मीन्स 1/1000. यहाँ पे 1, here 100 कट, सो 1 लीटर सॉल्यूशन रहेगा. इन द क्वेश्चन नंबर 17, 100 मिली in the question number 17, 100 milli of 0.1 molarity urea solution is diluted up to 200 milli, then the molarity is the. यहाँ पे सेम अपना वाला जो सॉल्यूशन 100 मिली दिया हुआ है, यूरिया का मोलारिटी 0.1. नाउ आवर फाइनल वॉल्यूम इज 200 हो गया. 100 मिली था, इसमें से 200 मिली हो गया. सो मोलारिटी ऑब्वियसली डिक्रीज होगा. सो ईयर M1 इज 0.1. ये वाला इनिशियल वॉल्यूम 100 और फाइनल वॉल्यूम 200 मिली हो गया. सो फाइनल मोलारिटी हाउ मच? सो देयर इज अ ट्रिक. M1V1 इक्वल टू M2V2. ये क्या होता है? इनिशियल मोलारिटी, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल मोलारिटी आफ्टर एडिंग वाटर, इट बिकेम 200. हियर M1.1 into 100. Here M2 we have to define. Here is 200. So 0.1 into 100 upon 200. So 0.1 divided by 2, 0.05 molarity is answer. Now question number 18. The formula for calculation of percentage of nitrogen in ammonia. In ammonia there is 1 nitrogen and 3 hydrogen. Atomic mass of nitrogen 14, of the hydrogen 1. So 14 plus 3. So molecular mass of ammonia is 17 gram. Out of 17 gram, 14 gram nitrogen is present. So mass of nitrogen into 100 upon molecular mass of ammonia रहेगा. सो ये वाला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन देगा. इसमें से नाइट्रोजन का मास कितना? 14 इंटू 100. एमोनिया का मोलिकुलर मास 17. सो इट गिव्स परसेंटेज. सो इट आंसर इज डी. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 19, 1 atomic mass unit is how much in comparison of C12? 1 AMU equal to 1/12th mass of carbon atom. Yes, 1 atomic mass unit means AMU. How much comparison of C12? Yes, जो एक कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 मीन्स 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. सो इसमें 12 पार्टिकल्स आ रहा है. सो 1 AMU का मीनिंग होता है आउट ऑफ 12 पार्टिकल मास ऑफ कार्बन में 12 पार्टिकल्स होते हैं, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. सो 12 पार्टिकल का 12 पार्ट गिव्स 1 पार्टिकल. सो जो एटम होता है इसका 1 पार्टिकल का मास कार्बन का 12 पार्टिकल का 12वां पार्ट रहेगा. सो 1 AMU मीन्स इन द एटम जो पार्टिकल्स रहता है उसका एक पार्टिकल का मास कितना. सो कार्बन में 12 पार्टिकल्स, 1/12
C is answer. Now question number 20. In the question number 20, you can see 2 mole solute dissolved in 500 gram solvent. Molality of solution. Here is molality, not molarity. Molality equal to mole of solute upon mass of a solution. Here 2 mole is given. Here mass of solution is 500 gram. So divide by 1000 gives a kilogram. So here will be 2 into 2. So molality will be 4. Another way we can say mole of a solute 2 gram into 1000. Here is 500 gram. So 2 to 4. So molality is 4. Now bye. We will meet in our next lecture. I hope you enjoyed my lecture. Then share my video and like my video. Till then, bye.